नंबर 12 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. श्री के राधाकृष्णन जी। जी बोलिए बोलिए। I raise a objection. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Excise Act 1944. माननीय सदस्य श्री शौकत राय जी। Madam, under Rule 72(1), I beg to oppose the introduction of the Central Excise Amendment Bill 2025. It is on tobacco and manufactured tobacco substitute products. Tobacco is harmful for the human body, and this bill does not mention such dangers on the packet of tobacco and manufactured tobacco substitute products. It only seeks to collect excise from tobacco, which is causing immense harm to human beings. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced, and for matters connected therewith or incidental thereto. माननीय सदस्य डॉक्टर DM काथिर जी आनंद। I rise to strongly oppose the introduction of the Health Security and National Security Cesses Bill. The bill may appear technically sound, but initially it imposes a new severe financial burden on the ordinary citizens of India when the inflation is there. Therefore, object the bill. माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। माननीय सदस्य House of मनीष तिवारी जी बोल रहे। नहीं बोल। माननीय सदस्य श्री शौकत राय जी। Madam, I give my notice of my intention to oppose the introduction of the Health Security and National Security Cess Bill 2025, Bill 2025 under Rule 72 of the Rules of Procedure. I beg to oppose the introduction of the Health Security National Security Cess Bill on the following grounds. Firstly, I am opposed to any cess imposed by central government, since it will not be shared with states. Secondly, clubbing health security with national security is ambiguous, since both are entirely different in their purposes. Thirdly, the cess on pan masala machines. Pan masala is harmful for health and is known to have caused oral cancer. The purpose of law does not mention any restriction on pan masala, and it does not specify that such warning will be painted on pan masala packets. Hence, I oppose the introduction of the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Ma'am, with your permission, I introduce the bill.